Jai Hind. Good afternoon, all my defense aspirants. I am Group Captain L.K. Pandey, taking SSB classes in Major Kalshi Classes, Allahabad, Prayagraj rather. And today I am here to tell something about, to sum up the entire psychology test for those who are very fresh. And as you all know, NDA entry is on, TS is on, AFCAT is on, CDS is on, NCC is on, SSC Tech is on. All entries are open now. There is a complete mela which is going on. It's a Kumbh Mela. All entries are now open. So, I am addressing the entire mass of defense aspirants who are for any entry, and they may be appearing for the first time. For you, the psychology. First of all, the basis of selection is the officer-like qualities. The officer-like qualities are 15 in number, and they are judged in 3 techniques of psychology, group testing and interview. They judge in 3 techniques. Same qualities are there, and these qualities are covering the entire body of a person. It are covered in 3 parts. Like they say, 15 qualities of expert every author. They aren't just check boxes, they are deep reflections of your personality, behavior and mindset under stress. There are 4 groups in this: factor 1, 2, 3, 4. Factor 1, planning and organizing. The qualities of the mind. Factor 2, social adjustment, the qualities of your heart, very important. And factor 3, the qualities of your guts, the social effectiveness. And lastly, factor 4, the qualities of your limbs, your hands and legs, that is dynamic factor. The first factor considers reasoning ability, effective intelligence, organizing ability, power of expression, etc. Summed up in this particular factor, all related to the mind. In factor 2, the qualities of the heart, social adjustment, we have cooperation, responsibility and the team spirit. There is a cooperation, and also it is the sense of responsibility, cooperation and social adaptability. Very important. How can you adapt yourself to a new social situation? See, all these are qualities of the heart, very important. And please remember, in SSB, the qualities of heart, factor 2, are very essential. We may make a compromise in factor 1, 3 and 4, but not in factor 2. Because factor 2 are the core qualities. In factor 3, we have initiative, ability to influence the group, self-confidence, spirit of decision, liveliness. And in the last factor, dynamic factor, the quality of the limb, we have courage, stamina and determination. They are the qualities which are included in factor 4. All these are summed up in 4 factors and are being tested by the 3 techniques of psychology, group testing and the interview. Now, the psychology test has 4 important ingredients, and all of them, they are actually not standalone. They all are intermingled. For example, the first test is thematic apperception test. We had seen perception last time in a video. Perception, this is apperception, right? So, this is the first test, and in this test, you are shown a picture for 30 seconds as it is given on the board, and you have to write a story based on the picture you saw on your own perception. You will be shown 12 stories, 11 plus 1, 11 picture with a with a stimulus, and 12 is going to be a blank picture. And the psychologist here sees how do you perceive the situations, and are you positive, are you responsible, and are you realistic and practical? That's very important to see in thematic apperception test. The next one being word association test. Gentlemen, this is the main test, TAT, and that is a confirmatory test. Is being confirmed. Whatever observations are made in TAT, the psychologist is now going to confirm those observations in that, which is word association test, in which you have 60 words shown to you for 15 seconds each, and your spontaneous thoughts reflect your attitude, belief and your self-confidence. The third test is reconfirmation test, situation reaction test. Very important test. In this, 60 situations of daily occurrence are given to you in a booklet,
and you are given 30 minutes to write your responses which reflect your decision making ability, leadership qualities, initiative, and of course composure under pressure, your stress tolerance ability. All these are they come out in this particular test of situation reaction test. And the last one is your own self assessment, that is self description test, SD. In SD, you are given 15 minutes of time to write 5 paragraphs about the opinion of various people, your parents, your teachers, your friends, your own opinion, and the qualities you would like to improve in yourself or inculcate, or what kind of person you want to become. So all these 4 constituents of the psychology test, which lasts for about 2 hours and 15 minutes, it sums up all the 15 auxiliary qualities. 15 auxiliary qualities which are being assessed by psychologists are also being assessed by GTO and by the interviewing officer. And finally, they all sit together and try to compare their notes and find out as to what quality, which assessor has found that quality lacking. And then they try to convince each other and find out whether the candidate is fit to be recommended or not. Now, the psychologist क्या देख रहा है, वो उसको आपका जो परफेक्शन है वो देख रहा है. देखिए पॉइंट कुछ दिए, अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं. साइकोलॉजिस्ट जान रहा है आपकी ओरिजिनल थिंकिंग, जो आप सोचते कैसे हो, क्या आपको सोचने की जो क्षमता है, इज इट बीइंग फोर्स्ड बाय समरी. भाई मैं अगर ओरिजिनल हूँ तो मैं अपनी तरह सोचूंगा, मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मेरी एज जो है, उस तरह सोचूंगा. बट अगर मैं एक तरह से कोच हो जाऊं और मैं किसी दूसरे की तरह सोचने लगूं तो शायद मेरी पर्सनालिटी ओरिजिनल नहीं रहेगी. तो क्या इस बंदे की थिंकिंग ओरिजिनल है कि नहीं है, दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट इज लुकिंग फॉर. एंड देन क्लैरिटी ऑफ थॉट, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है कि क्या मेरे गोल्स क्लियर हैं, मेरे फंडास क्लियर हैं, मेरा क्या जो एम है वो क्लियर है, आइडियाज क्लियर है कि नहीं है. ये बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए एज ए साइकोलॉजिस्ट. और तब उसके बाद आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या आपके अंदर पहल करने की क्षमता, इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई सुपरविजन नहीं है तो क्या आप डिसिप्लिन में रहते हो, क्या आप फिर भी वही काम करते हो जो कि आप करते अगर कोई आपके ऊपर खड़ा होता, आपको गाइड कर रहा हो. That is sense of responsibility. And also, can you initiate a particular task? Initiate करके क्या आप sustain effort कर सकते हैं जब तक कि वो goal achieve ना हो. This is another point being looked by the taken care of by the psychologist in your TAT, VAT, SRT and SD. And then consistency in personality across test. Consistency कि आपकी जो personality है वो ऊपर नीचे, not a sine curve. It has to be straight. अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस पे आई एम बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर मैनर, अंडर स्ट्रेस डू आई बिकम इरेशनल, डू आई स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. दिस इज व्हाट हैज टू बी सीन. देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियर, वेदर इट इज स्ट्रेसफुल कंडीशन और इट इज नॉर्मल कंडीशन, वेदर इट इज योर फैमिली, वेदर इट इज योर जवान्स फैमिली और योर जवान, वट एवर. There has to be consistency in your behavior, in your emotional stability as well. And all the tests which are there, TAT, VAT, SRT, SD, it has to be seen. It has to be seen in that light. And lastly, how well control you have over your emotions. Emotions. And can you think positive? As I told you earlier in the video that emotional stability is very very essential for a defense officer because we have to remain cool, calm and composed. जो हमारे घर के प्रेशर्स है, डोमेस्टिक प्रेशर्स है, हमारी फैमिली प्रेशर्स है, उनको हमें घर पे ही भूल के आना है. They have not to be brought into our normal system and we have to remain emotionally very strong in front of our men, in front of all the other juniors. And of course, we have to think positive and make others think positive. So, gentlemen, I'm sure आपको ये सब बातें जो साइकोलॉजी देखता है वो समझ में आ गई हैं. और लास्टली ये है कि आप अगर ये सब बातें हैं तो आप शार्पन कैसे करोगे अपना माइंड इन OLQ को करने के लिए. देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो मैंने लिए हैं. फर्स्ट इज रियल लाइफ मिलिट्री स्टोरी जो है, जो हमारे बड़े बड़े
वॉर्स हुई हैं, जो हमारे जनरल्स थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 की जो स्टोरीज़ हैं, और जो इवन हमारी कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, हमारे इंडो पाक वॉर 65, 1971, इंडो चाइना वॉर, ये बड़े बड़े जो हाँ जिसके वॉर टाइम हीरोज़ निकले हैं, क्या उनके बारे में पढ़कर उनसे मोटिवेट कर सकते हैं? उनकी प्लानिंग क्या थी, उनकी प्लानिंग की थी, एग्जीक्यूशन कैसा था, उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो दैट इज़ गोइंग टू रियली मोटिवेट एंड बिल्ड अप आवर कैरेक्टर. एंड इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक मैं जानूंगा नहीं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तब तक मैं इंप्रूव कैसे करूंगा? आई मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, आई मस्ट फाइंड आउट कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है. कंपैरेटिव, अगर मैंने किसी को कुछ करते हुए देखा तो मैंने कहा कि ठीक है ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्या कमी है. नाउ व्हेन आई कंपेयर, तो मैं रियलाइज करूँ कि मेरे अंदर कमी है, वो इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं उसको. तो इंट्रोस्पेक्ट करके मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता हूँ एंड अपने OL को डेवलप कर सकता हूँ. देन आपका ऑब्जर्वेशन, आप 24/7 सोचते रहिए. आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपको एक होर्डिंग दिखाई पड़ी, आपने देखा अच्छा ये थीम, अगर ये पिक्चर है, क्या स्टोरी बनेगी. ऑल द टाइम यू आर इंक्रीजिंग योर ऑब्जर्वेशन एंड यू आर टीजिंग योर ब्रेन. अपने ब्रेन को आप स्ट्रेस पे डाल करके सोचते मजबूर कर रहे हो. उससे आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी आपकी, और आपके आइडियाज़ क्रिएटिव बन जाएंगे. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी जाएं, स्टेमिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू स्टे फिट. अगर आप फिट हैं तो आपका फिजिकल स्टेमिना तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में मेंटल स्टेमिना भी इंप्रूव करेगा, और ये लॉजिकल बात है. सो ट्राई एंड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड build up your stamina. And most importantly, be honest in your answers. Very important. You can't fake the psychologist. अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हो, तो कृपया करके ये बात अपने वहीं पर रख के आइएगा. साइकोलॉजी टेस्ट देने से पहले इस बात को निकाल दिए जहन से. साइकोलॉजिस्ट आर हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, और वो एकदम जरा सा भी अगर कोई डाउट होता है आपको रिजेक्ट कर देते हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल इन राइटिंग योर आंसर्स. बी ऑनेस्ट, बी सिंपल एंड ट्रूथफुल, एंड आई एम श्योर यू विल सक्सीड. थैंक यू वेरी मच. आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा साइकोलॉजी के बारे में, और आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में जानने का. और अपने कमेंट्स शेयर करिएगा, और कोई अगर डाउट हो मुझसे पूछेगा. आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट. थैंक यू. जय हिंद.